S for students. S for speaking. A student who is intelligent or diligent towards speaking is highlighted all through. तमମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହାର ସ୍ପିକିଂ ପାୱାର ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହାଇଲାଇଟେଡ ଦିନ ନା ଦିନ ହବ। ତେଣୁ ୱିନଷ୍ଟନ ଚର୍ଚିଲଙ୍କର ସେ ଭଲ ପରସେଣ୍ଟ ରଖୁନଥିଲେ, ପରସେଣ୍ଟେଜ 98 କି 99 ରଖୁନଥିଲେ। still an orator in the sense fine speaker, ପ୍ରଗଳ୍ଭ ବକ୍ତା ଥିଲେ, and his speaking was extempore in the sense without any preparation। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିକିଂ ଦଉଛେ ରାତି ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ବସି ଘୋଷୁଛେ ମୁଁ ଯାଇ କଣ କହିବି, ଯଦି ବାଟରେ ଟିକେ ମନ ନ ପଡିଲା ସେଇଠି ରହିକି କଣ କହୁଛେ with this I want to conclude this speech। ଏବେ ଯଦି ଜଣ ଜଣ କରି ମୁଁ ଡାକିବି କେଏସସି ସ୍ପିକିଂ ଗୋଟେ ଦବନି, ଫିର ବି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ରେ ଦେଖିବ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ପବ୍ଲିକ ସ୍ପିକିଂ ହବ ରିଲେଟିଂ ଟୁ ଅନେକ ଟାଇମ୍ସ। ଆଉ ଆଲଫାବେଟିक ଏ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହବ ନା। ଅପଲେ ଚର୍ଚିଲ ଇଜ ଆଲସୋ ଅଫିସର ଇନ ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ମି ର ଅଫିସର ଥିଲେ। A historian means contacting or having in relationship with the history, a writer, one who composes fantastic way, and an artist in the sense and articulate anything here according to his potential। He was awarded the Nobel Prize in Literature in 1953। Actually students हमें मध्य पढ़िले आउ जन को बते से नोबेल प्राइज पाइथिले के से कभी दिला लिटरेचर का आउ जन मध्य पाइथिले हमें पढ़िले कागो बोले सोफाराजी और टॉपिक इज कंसर्न लिटरेचर पाइ नोबेल प्राइज पाइथिले। सी राइट टू से आर.के. नारायणन लिटरेचर पाइ हमर आर.एन. ठाकुर पाइथिले लिटरेचर पाइ बुलबुल को मसेर पाइथिले आर.एन. ठाकुर 1913 को लिटरेचर पाइ गीतांजलि केतटा पोएम दिला 103 So students listen, Winston Churchill was awarded the Nobel Prize in Literature in 1953। So Ataharo is an expert from chapter 2 of Winston Churchill's autobiography, A Roving Commission My Early Life। तम जीवन काल रे पिले तमे देखिबा बहुत पिला मैट्रिक रे तम के 30 डिवीजन पाई सेकेंडरी किसी हायर क्लास पे ओटे क्लियर नंबर माने जेती ये एग्रीकल्चर रे थीबो नंबर 1, ये पुलिस डिपार्टमेंट रे थीबो, ये जदी अपार्ट को जाई चोरी करी करे, ये टेलरिंग कर दबो नंबर 1, ये कपड़ा दुकान कर दिबो नंबर 1। जे जो फील्ड रे था आ 20 वर्ष पे नंबर नहीं जीवो, कारण कोन तुमको वर्तमान 15 प्लस और 16 आ 20 वर्ष के पर के 36 तमे नियंती माने हाथ को बिया देई के जाके अमेरिका रूसिया इंग्लैंड एमडी फॉरेन कंट्री जाई के रहि दिबो, फिर भी तमे रोजगार करथिबो ना नहीं मन को ना सम्राट कोन कहउछु फास्ट रोजगार कहि तापर जाई के जा प्रसारता करिबो ना। तन कर पिले मन रखो व्हाट द टॉपिक टेल एट हरो इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम चैप्टर 2 हरो विंस्टन चर्चिल्स ऑटोबायोग्राफी। What is the difference between autobiography and biography? Autobiography means life history of a person written by himself. Life history of a person written by other is known as biography. At the religion in the level set autobiography. That is one word substitution. Try to understand each and every word, students, and don't sit silently. You are from Kerala. Why are you sitting silently? When I heard that you are from Kerala, I became proud that actually one of the Kerala guys is available here in operational of knowledge in Hindi or English. But you are silent, very innocent girl. Listen, friends, a roving commission my early life. This is the factual thing. And from that, this concept actually on examination has been followed. से तांका लाइफ हिस्ट्री ऊपर जोटा लिखि दिले तादरु एक्सपर्ट करागला तादरु डिक्टेट करागला तादरु एक्सट्रैक्ट करागला वर्मा एग्जामिनेशंस फॉर वेरी एंड नॉट ए प्लेजेंट एक्सपीरियंस इले तमे भी मध्ये जानु थिबो तुमको पाठ पढे को भल लागे कोचिंग आसे को भल लागे किंतु एग्जाम देबा को दियो भल लागे ना। एग्जाम जेते बेले स्टार्ट हुए तमे बाबू आउ जे बुची जाते कि जो नोटिफिकेशन आसीबो केते तारिख रे एग्जाम अछि ना मार्च 5 रे एग्जाम आ 10 दिन बुची जाते कि जरो ठाकुर देले बुची गेला मार्च 15 रे गेला पुणी तमे आउ 10 दिन बुची जाते कि
मार्च 25 हे गेला जीवन तुम जदी के ऐसे पचारे तुम एग्जाम दबा ना दबा ना नहीं तुम टोटली दबो कि तुम सर्टिफिकेट दरकार 90% समस्त एग्जाम ପାଇଁ ଗୋଟେ application ଥାଏ ये एते प्लीजरिंग टास्क नियंते the apprehension of not doing well makes even bright students anxious बहुत एंजाइटी भीतर रहती ब्राइट स्टूडेंट माने अब भी गोटे पिला मन रेखा तमे जते मैथ पढले कोन मैथ सरीबो केबे सरीबो किछि जते पढले कोन सरीबोनी खाली सबले कहतो हां कोर्स टिके पेंडिंग रह गेला मु आ गोटे दिटा दिन पाइथिले भलो होइना हेले कि तुमको 10 दिन देले कोन वर्ष वर्ष तमे तो फर्स्ट ईयर का टोटली पाइलो सेकंड ईयर का टोटली पाइलो बट तमे कॉन्सेप्ट कोन क्लियर हो जते भी पढले बिले केबे कोर्स सरे एग्जाम पूर्व हमको टी एप्रीहेंशन का नर्वसनेस आसे read the following unit of the text and note how the writer puts his entrance examination to her. It is very painstaking. It is very adjudicacious. It is very softening. केमिति ना हरो कहीं जो entrance examination दा दबा हरो रे जो entrance examination दबा आप भाई writer कर प्रकृति preparation केमिति दिला भलो पिला कि मंद पिला केबे जेमति नीट परीक्षा गला केबे गला नहीं तमे नेक्स्ट ईयर को प्रिपेयर्ड है कि नीट पे एग्जाम दबा रेडी हिजबो the text. I had scarcely passed my 12th birthday when I entered the inhospitable regions of examinations, to which for the next 7 years I was destined to journey. Listen, students. Scarcely बदल जामे placement करी दे परिबा कोन hardly. Scarcely जगरे placement ही परिबो hardly. आउ कोन देखो scarcely पकरे सब बेल पई लागिबो कोन ऑब्जेक्टिव कोन लागिबा सेस when scarcely pakere when lagibo no sooner pakere dhyan lagibo scarcely pakere when lagibo hardly pakere when lagibo no sooner pakere dhyan lagibo ताले डिप्ले करिवार उद्देश्य होची कोन scarcely माने कोन कोनसी गोटा घटना घटु बा न घटु ता पूर्व घटना घटु कि न घटु हमको ता पूर्व जो हम कोन करू प्रिपेयर्डनेस करू ताले देखो I had scarcely passed my 12th birthday मोर प्रकृति 12 वर्ष रे जते 12th बर्थडे सेलिब्रेशन हैला when I entered the inhospitable माने कोन without any interest मोर इंटरेस्ट नथिला कि घर लोक जानि दिबो तमे वर्तमान पाठ पढतो तमे कहतो मु ओईटी के देबी मु देबी सिनर्जी देबी जूनियर साइंटिस्ट पे देबी कि मु देबी नीट घर लोक ताकर प्लानिंग करी बाध्य कर देबी तू एटा दउन तू सेटा दउन तमर जते इंटरेस्ट नथिबो घर से स्टूडेंट मिल बाध्य कर सो स्टूडेंट इन सिमिलर वे I entered the inhospitable regions of examinations, through which for the next 7 years I was destined to journey. Preparation होगी केमति हर यूनिवर्सिटी हर स्कूल रे जाई के मो पढिबी एटा नंबर पटे पिन मोर पटे these examinations were a great trial to me. What is the meaning of trial? Trial means testing. ये examination मो काई गोटा टेस्टिंग थिला. The subjects which were dearest to the examiners were almost invariably those I fancied least. तमर द्वारा जो तमे जो साइंस पिला तमर गोटे एंट्रेंस एग्जाम निया दिबो से एंट्रेंस एग्जामिनेशन पई तमे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बाव एटा प्रिपेयर हे तुमको पचराला इकोनॉमिक्स रो तुमको पढ़ाला साइकोलॉजी रो तुमको पचराला एंथ्रोपोलॉजी रो तमे कोन गोटे बीट अबाउट द बुक्स खाली अंधार रे बाड़ी बुली लाबला क्वेश्चन आंसर दबो तो बुझी परछ ना नहीं तम सब्जेक्ट रे जोटा तुमको एंट्रेंस रे पचरा जीवनी तुमको सेपरेट पचरा जीवो इट वुड बी समथिंग अप्रीहेंडिंग इट वुड बी समथिंग ऑन टू डिस्कस so students what the subject said what the sentence said the subjects which were dearest to the examiners were almost invariably those I fancied least जोटा एग्जामिनर माने पचारिले सेटा होची एग्जामिनर मानको पई डियरेस्ट मु जो जीकेटा जानिथि आंसर तुमको पचारिबे ना मु जोटा न जानिथि तुमको पचारि तमे भूल आंसर दि दला कि ठीक आंसर दला मु जानि आपको बुझि पाइलो ना नहीं तेनु तांको जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर हर स्कूल पई सिलेक्शन करा होला हमर पर्टिकुलरली डेस्टिनेड इन दिस सिलेक्टेड सेठी जो गुडा सिलेक्शन करा बला क्वेश्चन एक्चुअली कंपैरेटिवली दोज आई फैंसीड लिस्ट जो टॉपिक ऊपर मोर किछि इंटरेस्ट नथिला सेही दिगरे मते से क्वेश्चन करता I would have liked to have been examined in history, poetry and writing essays. मु प्रकृति एक्सपर्ट रहउची को सब्जेक्ट ऊपर पर्टिकुलरली हिस्ट्री, पोएट्री एंड राइटिंग essays. ये तीनटा सब्जेक्ट ऊपर मैं एक्सपोनेंट दिली किंतु मते कोन पचरा गला द एग्जामिनर्स ऑन द अदर हैंड वेयर पार्शियल टू लैटिन एंड मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स बाबत रे मते से पचारि पडले 3D फार्मूला रो
डेरिवेटिव रो मैट्रिक्स रो जोटा कि मुंड को बुलेला एमिति मु तुम सेक्रेटरी गई घरे सो ट्राई टू अंडरस्टैंड लैटिन या मैथमेटिक्स पेपर ऊपर पचारिले and their will prevails अबिले जेतु टीचर अछंती जेतु एग्जामिनर अछंती ताको इच्छा जहा हो से पचारिबे तम इच्छा हम से पचारिबे कि तमे जाऊ जो मुते इंडियन क्रिकेट बाबत रे पचारता मु ढाबा मार के कहि जंती कोई को सूर्य वंशी के हाई स्कूल रन कर के छोटा चौका मारची गोरे सिंह के जदी पचारिबो फुटबॉल रो प्रकृति रे चैंपियन किए वर्तमान ब्राजील रो सरियो हम विराट कोहली ना रोहित शर्मा जन फुटबॉल को देखा पचारे हॉकी रे जदी पचारिबो मतलब इंडियन टीम पे कैप्टन किए काली कहि आज कहि परिबे तमे तण करे चाहिबो पर मु जो सब्जेक्ट जानि छी मु बाबत बोलते कि से सब्जेक्ट रादरे क्वेश्चन पचारा जाऊ but it was something different, it was something extraordinary. So as the expression of willpower of Winston Churchill is concerned, the entrance examiners were something different as the expertise view of Winston Churchill is concerned. तापर एक्सरसाइज view दिला मो सब्जेक्ट ऊपर किछि पचरा जाऊ एगो अल्टरनेटिव अलगा उटा पचरा हला तमे एग्जाम रे जते बळे एग्जाम रे बचित को तुम आसु न दिबो तुम केमिति लागु दबो जानि दबो एग्जाम रे तुम दबो को जते बळे एग्जाम रे तुम के आसुनी तुम एठी कोन दबो दबो कि बळे तुम मुंड कोन बुझियो something must be in you. So students, and their will prevails. Moreover, the questions which they asked on both which subjects were almost invariably those to which I was unable to suggest a satisfactory answer. मु गोटे satisfactory answer दे पारिनी मते पचारिबो के who is the father of the nation मु कहि मदर टेरेसा लेप्रोसी आश्रम करथिबे तेरे में satisfactory answer तो बुझी परछन ना के मु कहि इंडिया के इंडिपेंडेंट हेतिला तो मु बजारे तमे कहबो पाकिस्तान में अगस्त 14 तारिख रे इंडिपेंडेंट हेतिला हमें खाली गोटे फिल अप करबा क्वेश्चन आंसर के कोन सैटिस्फाइड ना बोले कि पाओ ठीक ओके आई शुड हैव अ लाइट टू बी आस्क्ड टू से व्हाट आई न्यू मु जोटा जानिथिली सेटा मते आंसर देबा को भलो लागुतिला दे ऑलवेज ट्राई टू आस्क व्हाट आई डिड नॉट नो मु जोटा जानि नथिली एग्जामिनर मते मते सेही क्वेश्चन पचारथिले आ इट वाज आई मीन समथिंग फैंटास्टिक इट वाज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्हेन आई कुड have willingly displayed my knowledge they sought to expose my ignorance से सब बेले जानिबे ये पिलार इग्नोरेंस कोठी अछि को फकर फॉल्ट रो इग्नोरेंस मु जानि तमे इंग्लिश भाषा रे ग्रामर रे तमे नरेशन रे वर्णन करिवो डायरेक्ट इंग्लिश स्पीच मु तमे बोलियाली मोटा लग दिले मु तमे देखि सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन तमे सिना कहि पारु नथिबो तमे खाली मन न होबो कि मु जानति सेरा मते पचार तमे अनर्बल कहि कि पढे तमे कहबो जे मु तम मन रे तमे कोन करछ चेस रे पूरा एक्सपर्ट अछ मु तमु कोन करबी क्वेश्चन अराइज करबी रिलेटिव टू जिम्नास्टिक बाबत इट विल बी समथिंग हार्ड इट विल बी समथिंग आई मीन प्री ऑक्युपाइजिंग टू आंसर a sporting event is concerned so students I have willingly displayed my knowledge displayed means exhibit मु कोन कली शो ऑफ कली मोर नॉलेज को सब्जेक्ट अछि they sought to expose my ignorance मु कोटा न जानि सेटा जानियो को चाहिए नॉलेज रो अपोजिट कोन इग्नोरेंस knowledge ignorance this is sort of a treatment had only one result I did not do well in the examination एग्जाम रे दीटा थाए गोटे होची रिजल्ट आसीबाटा सियोर इट मे बी गुड और बैड भलो हो कि मंद हो तमे मैट्रिक परीक्षा को डरी दिलो मैट्रिक परीक्षा रिजल्ट कोन रहि गेला बुझिए बारला ना तमे पास करो तम मान के भीतर कोई भेज नहीं दिबे स्टिल रिजल्ट डिक्लेरेशन है जाओ ए जे कि नहीं तेनु चर्चिल आंसर दियंती कि न दियंतु स्टिल देन द रिजल्ट्स आर आउट बट इट इज वेरी एम्ब्रॉयडिंग सो फार as the entrance examinations proceeding of conduct is concerned जोटा procedure का दिला it was something indifferent it was something not prerequisite so far as the knowledge of Winston Churchill is concerned why what is the reason was that Winston Churchill was expertise on particular or specific subjects but those questions were not asked by the examiners this was especially true of my entrance examination to one the headmaster Dr. Weldon however took a broad-minded view of my Latin course he showed discernment in judging my general ability okay students when entrance examination is conducted we focus on general ability as well as mental ability तुमको गोटे तम टॉपिक ऊपर तमे समस्त भलो कर दे पारे किंतु जनरल एबिलिटी वुड बी समथिंग वेरिएशन
मेंटल एबिलिटी रे तमर आईक्यू टाको टेस्ट करा जिवो जोटा कामे को रीजनिंग जोटा कामे रीजनिंग को ट्राई टू अंडरस्टैंड since you are science student अरे कौन अछि so they want to tell one कौन अछि और फिर चिंता कौन देखो कि तुम्हें साइलेंट कैसे होइबा जाय देखो since you are science students I will tell you what is the difference between mental ability and general ability. We must have to discuss here in okay students listen you are expert in mathematics I know very finest students of mathematics that is the basics of Aryabhatta as well as Einstein 66 36 18 what would be the answer it is mental ability the exponent of mathematics your grandson and granddaughter of Archimedes 9 Sangram told 9 and what is the answer so mathematician hero of Jamshedpur you say ठीक है हम लोगों ने कभी गौर से कहा सिद्धांत इंडियन साइंटिस्ट और ओडिशा listen students as soon as we got it there so there you go listen 66 6 into 6 36 36 3 into 6 that's equal to 18 18 1 into 8 equal to 8 हो गया क्या मेंटल एबिलिटी जनरल एबिलिटी इंडिया into New Delhi it is the question I know France Paris India is to New Delhi France is to Paris those who are preparing for class as well as CVT some type of questions will come in there okay students wonderful what is the difference between mental ability and general ability okay so students relating to the topic बाबत रे चर्चा कर किछि नॉलेज न पिला किंतु जनरल एबिलिटी ऊपर से स्ट्रांग पिले एक्स्ट्राऑर्डिनरी कलेक्टर गोटे पिला देखि दिबो सकाळे बही धरि कि बसेबनी तमे कोन करिवो 18 घंटा जगह रे मिनिमम 12 घंटा 14 घंटा भलिया साइंस पिला पढुथबो
गोटे गोटे पिला कोन करते बुलुथिबे सब करते जेतबे तमे खाइ पिकि सोइबो जे पाठ पढा आरंभ करबे 3-4 घंटा सब पाठ सारबे आदि होची कोन के एक्चुअली रेडी विथ जोटा हमें कोई प्रेजेंट विथ जनकर स्टैंडर्ड ऑफ नॉलेज जोटा होची आईपी इंटेलिजेंस कोटी समस्त बेटा न गोटे गोटे बहुत दुष्टामी करती किंतु फ्यूचर रे नंबर 1 ऑफिसर होन तमे देखिबो तमरे 10th लेवल जो माने गांधी को बढ़िया शांतशिष्ट दिबे प्लस 2 सेकंड ईयर को भयंकर पूरा खतरनाक हे जेते हो नाइ तमे इच्छा करी कहा बदरे किसी सिक्योरिटी दे परिबनी आज गोटे पिला भलो अछि तमे कहबनी 100% भलो है के रहबो 15% तमे ना हबनी तमे पढिते तमर गोटे फर्स्ट ईयर इंग्लिश रे दिला कोन ता टॉपिक ना दिला स्टोरी रे आफ्टर 20 years this was especially true of my entrance examination to her arokai moje entrance examination rahila the headmaster Dr. Weldon however took a broad minded view of my Latin course he showed discernment in judging my general ability se koile pilata na answer dei paruni standard achi bola तमे आज जनरल एबिलिटी मेंटल एबिलिटी कहि करलनी तमे कोन तम स्टैंडर्ड लो अछि स्टैंडर्ड लो नै गोटे जिनिस जानि नथिलो टीचर माने कोन आज जानि गेल आ केबे बुलिबनी आ केबे बुलियो की बिल्कुल डिफरेंस बुलिबो की केबे बुलिबो नाही दैट इज द मेथड ऑफ टीचिंग दैट इज द लर्निंग प्रोसेस सो स्टूडेंट्स व्हाट हैपेंस टू बी he showed discernment in judging my general ability गोटे गोटे मन रख पिला को राइटिंग स्टैंडर्ड को देखि के देखा जाय जे पिला कैपेबिलिटी केमिति अछि गोटे गोटे पिला मानकर प्रेजेंटेशन को देखि के देखा जाय जे तोकर केते बढ़िया स्टैंडर्ड अछि तमे जानि थिबो पिले बहुत जगह रे हम लिटरेचर ऊपर पर्टिकुलरली रिलेटिव टू हमर स्पीकिंग कैपेबिलिटी ऊपर आजिकल सिलेक्शन करा आपण माने जेतबे प्लस 2 सेकंड ईयर साइंस रे भलो परसेंट लेके पास करि सारिबे तापर कैंपस सिलेक्शन हबो कैंपस सिलेक्शन सा उलिया रे କଥା हेबे की बुलबुल मैडम ठीक है आसंतु चेयर ऊपर बसंत जेनिति कहबो की totally 100% English and you must have certain type of benediction relating to the excellence of English literature you must have show your potentiality one can see your certificates one piece of a paper can't actually judge your knowledge always the benediction proportion relating to world affairs relating to current affairs relating to science and technology so on and so से जान तम पे प्रकृति नॉलेज से कि कहीं कोई दे नॉलेज इज पावर बट सर्टिफिकेट इज नॉट पावर what is it knowledge is power certificate is not power if you know no one can what is the qualification of knowledge or modi still then the exponent of surgical school नरेंद्र मोदी को क्वालिफिकेशन के जानना थी अधिकांश कोर्स ग्रेजुएशन में बहुत जल्दी सर्टिफिकेट फिर भी ताको पाखरे जो माने हाईएस्ट माने प्रमोद विषय अछन सेमान को ताको अंडर काम करछन ना जनकर क्वालिटी जाऊ ना जाऊ विल गेट जने ग्रेजुएट न दिले किंतु ताको पाखरे लक्ष्य टेक्निकल इंजीनियर तो जाऊ ना try to understand my point of view that is knowledge that is knowledge so students Dr. Weldon was the headmaster however took a broad minded view से को टोटल आउटलुक ताकर ब्रॉड थिला प्रकृति पिलाटा सिना आंसर दे पाइलानी कि तर स्मार्टनेस अछि से दिन बहुत किछ रिजल्ट करि परिबो से व्यू कहां आसिला हेडमास्टर पर से he showed discernment in judging my general ability से प्रकृति रे मो स्टैंडर्ड जनरल एबिलिटी के जज कले this was more remarkable because I was found unable to answer a single question in the Latin paper पिले लाटिन पेपर रे जमा गोटिए क्वेश्चन आंसर देई परिबे केमिति मु कहली तमे धरा जो पाठ पढियो फिजिक्स से दिन तमर क्वेश्चन आसीबो लॉजिक तमे लॉजिक बाबत रे कोन करिवो एक नंबर क्वेश्चन पर आई लिखि देई करी तो हां जहाँ दिए कहते स्टोरी सब मन पड़े ना आ कौन करियो पाठ तो सिना किछि नाही पाठ सिना मन कोन लिखिबो ये से देला कोन लाटिन पेपर ऊपर कान विंस्टन चर्चिल लिखिबो आई रोट माय नेम एट द टॉप ऑफ द पेज समस्त हमको बेसी भलो लागे दीटा जिंस निज ना निज फोटो हम मुह पर को बांदर पाकड़ मुह हे जाउ जे कहदो तो मोटा खराब न देखियो तो मोटा पड़े देबो नहीं तम ना को किए तो नाटा कोन एमिति पना तो ना तो भारी बोल संगे से कंप्लेंट दियो तोर पिला मन रखा एडी चर्चिल कोन कले पेपर ऊपर कोन कले ताको नाटा को लिखि देले नाटा लिखि देले आ कोन कले पिले आई रोट माय नेम एट द टॉप ऑफ द पेज आई रोट डाउन द नंबर ऑफ द क्वेश्चन 1 को पूरा सुंदर करके लिखि के इनवर्ट भीतर लिखि देली आफ्टर मच रिफ्लेक्शन आई पुट ए ब्रैकेट राउंड इट 10 पिले हमें जानि छै मैथमेटिक्स रो जते बेले साइन या नंबर आसे
Algebra means study of a sign and number. Try to understand my point. When there is sign and number, comes to the formula that is BODMAS. 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 B for brackets, O for half, D for division, M for multiplication, A for addition, S for summation. Without this knowledge of BODMAS, no one can amplify his knowledge in algebra. Without the application of actually BODMAS, we would be algebra. Try to understand my point. We would be not talking towards mathematical arena, mathematical corridor, mathematical panorama, mathematical costume. So student in a similar way, say कौन कलम मन रखो one देखिए bracket दे दिले बड़ा thereafter I could not think of anything connected with it that was either relevant or true. पिले बड़े बड़े कौन करो जो पिला बने मूवी देखी ची बहुत पिला जहाँ को कौन आसरा पाठ आसे ना जो मैं पढ़ो दिनी तमें ताको डाकी दबो ए आसिलु से 3 नंबर क्वेश्चन एटी मैथमेटिक्स का कलु जे कोन करिवो अंटा को देखिबो केते बेले सारा को टाइम चलिबो सेही क्वेश्चन की थरे लिखि दबो पुनः लिखि दबो पुनः थरे क्वेश्चन की लिखि दबो लिखि दबो चार छोड़ रखो सारा के चुप चुप के सारा पर बेसी जा लागे पिला उनके साथ ही जानना सारा पर सेठी मास्टर से बेले सारा सारा चुप के नहीं देखि तारे हे कि पर क्वेश्चन लिखुची लिखौची क्वेश्चन लिखुची लिखौची जेमते घंटा बजो सर टाइम हे गला मोर को कोऑर्डिनेटर ये रहता है टाइम हे गला अब तू जा सार काहे पे टेंशन नेबे खरा जो गरम मुझे मुंडो सजे किलोची सेम टू पिला मन रखो ये कौन करले बर्तन चर्चिल कौन करले I could not think of anything connected with that either relevant or true. Cheta relevant in this sense. What is the meaning of relevant? Relevance means related. Topic is related how thing how serial number 1 they give you. Incidentally, in the event of there arrived from nowhere in particular a plot and several smudges. Delay. हमें जल्दी प्रैक्टिकली देखिबा जो भी हंस अछि सेठी लुह अछि जदि सब जगह हमको आसीबा आंसर भारी खुशी हे जिबा ए सब जगह आंसर हम देख आसी जदि किछि हमको न आसीला ताले आपे आपे हमर लोतकर धार होई आसीबो आखिर कोन पडला जो पानी गुडा बोइबो से पडिबो कोठी क्वेश्चन आंसर शीट ऊपर आ तमे जानि दिबो व्हाइट कलर रा जो आंसर शीट तापरे हमर जेतबे लोतक बुंदा बुंदा हेकरी पडिबो सेतबेले गोल्ड एंड स्मचेस माने कोन कुचा मचा हे तमे जानि ना पानी पड़ी गेले पेपर ऊपर कोन हुए तो कुचा मचा हे जाय ना सेटा होचे पिला हमरे कोन कहला लॉट एंड सेवरल स्मचेस I kept for 2 whole hours at this sad spectacle. मुझे इतना दुख लगा है मैं किसी जानी नहीं काटूंगा ये कौन मते केमिति आंसर देबी 2 घंटा काल मु सेमटी बसिछ तमे आंसर लिखिला परे कोन करूछो आंसर रे रीचेकिंग करू ना रीचेकिंग करूछो तथा भी तमे होछ आउ टिके समय मिलन देखि आपनी ओके देखि जांदी सारे तबे आसीबे ए कपिडा देलु सारे आउ ओके मीडिया जे जाकू जमा न आसी से कोन करबो जो माने एग्जाम रे आंसर लिखुते पे आंसर कर राखिबो अरे पाठ गुडा को मु चेचा होइची ये बसले लिखुछथि आ ये मोर आज हम प्लान होई मोर एंडी मु जेते न लिखुची एकाने के लिखिबा कथा मुई ताले क्लास रे इंपोर्टेंस बढिबो गोटे एग्जाम हला प्रियंका कोन से बिना आंसर शीट एति नांती ताकि जो कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ पैटर्न्स तो एति कोन है जी एंटागोनिस्टिक रही गला पिले आई गेस्ड फॉर 2 होल आवर्स एट दिस सैड स्पेक्टेकल ए दुख दृश्य मते क्वेश्चन दिया है कि मते आंसर शीट दिया है कि मते रूम दिया है कि मते फैन दिया है कि मते एसी दिया है कि पेन दिया जाय छी गोटे जिंस मु लेखि करू सेटा कोन आंसर मो बडी प्रकृति रे यूनिक स्टूडेंट केही नांती सो दर आर द एंट्रेंस टू आवर and then merciful ushers collected my piece of full with all the others and carried it up to the headmaster's paper ushers means attendants जो माने इन्विजिलेटर लेटर माने जिपे एग्जामिनर माने जिपे इन्विजिलेटर माने कोन बोले बा हमर एग्जामिनर माने कोन करबे दियो आंसर शीट में सब कलेक्शन करि गेले कलेक्शन करिकरी नेकरी करले ऑल टुगेदर बोर्ड रखिले ना गोल्डन का टेबल ऊपर हेडमास्टर का टेबल ऊपर रखिले दैट इज द आंसर शीट एवं ताजेर मध्ये कलेक्टेड दि जायतिला कर क्वेश्चन चर्चिल कर इट वाज फ्रॉम दिस स्लेंडर indications of scholarship that Dr. Walden drew the conclusion that I was worthy to pass into our अरे आश्चर्य कथा जेते बेले सिलेक्शन करे गला प्रोसीड्यूर रे सते प्रकृति रे गोटिए पेन आ गोटिए पेपर रे के बेले जन पर कैरियर को जज करियो बटी तेनु बहुत गोटे टैलेंटेड पिला
एग्जाम रे 8 दिन पूर्व से कौन से गोटे सीरियस एक्सीडेंट रे पड़िला से आगम पढ़ी परला नहीं कि एग्जाम देला कि तार टैलेंट अछि पोटेंट अछि एग्जामिनर ताको कोन करले वैल्यू करले एवं से जो सिलेक्शन प्रोसेस रे ताको कोन करले ना यूनिकली सिलेक्ट कर देले से गोटे सुपरफाइन ऑफिसर वाला सेटा डिपेंड करे कहा ऊपर और साइड आउटलुक ऑफ द एग्जामिनर ऑल्सो ये कहार को दिगरे पोटेंशियली प्रोपोर्ट वे रही छी सो आरो भाई सिलेक्शन कर देले के डॉक्टर वेल्डन के दिले it is very much to his credit it is showed that he was a man who capable looking beneath the surface of things हमें देखिबा जो माने प्रकृति रे देखिबो चोरा गाड़ी जो पुलिस ऑफिसर माने अछन से चुपचाप कि एम किछ डाई दिबो के जानि परिबो मंगलवार गाड़ी बुलेला वाला ए अरे को रॉकेट कौन सा चार कहला पर हाथ गोड़ थबो सर कौन चोर मन चोर गढड़ी रे बहुत देखिबो कटक टाउन रे एक्सपर्ट पुलिस ऑफिसर माने अछन से चुपचाप बुलुले किछ नाही ए कौन बैग अछि मो बैग रे बोई पद तो बैग रे बोई पद नै कोन छेगा सीए जानि देबे कारण कोन कहलो हम साइकोलॉजी होची आमे जदी किछि भूल कर दिया पहिले एक्चुअली माइंड रे किछि ना किछि टॉपर आछि ट्रम्बुल आसी आमे केबे धीरे धीरे कथा कहि परिबा नै पर्टिकुलरली कथा कहि सेति पे आपन मेंटालिटी in a similar fashion मन रखो जो माने प्रकृति रे beneath one's capability in the sense one's inner capability गोटे तमे देखिबो तमे तोले इंटरव्यू बोर्ड को जीवो बड़ बड़ यूपीएससी हला कि ओपीएससी हला सेठी तमे टॉपिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स रे टीचर माने पचारिबे तो पचारिबे तम सब्जेक्ट अनुसार गोटे गोटे साइकोलॉजी करिबे प्रकृति एही काम पई ये फिट होबो कि न बुझी पत पुलिस डिपार्टमेंट रो आईपीएस एते कोन समस्त आईपीएस हेजिबे ये सब जियो मानकर डेयरिंग अछि सब जियो माने एक गोटे 4टा राति रे जाई ड्यूटी कर परिबे हां ए ट्यूशन 7टा 15 8टा लोग हम घर को जीवो मम्मी फोन कलाडी से सब राति रे ड्यूटी करी पुलिस ये सब एते काम केही कोन से बस साइंटिस्ट हे परिबे न्यूक्लियर बम तैयारी कर परिबे पुलिस डिपार्टमेंट एलाउड करता हाइट नहीं है तो तनु बिले मन रखा it is Vartaman it is sure that he was a man of capable of looking beneath the surface of things see even inner capability तांकर दिला इंटेलिजेंस दिला गोटे पिला को से कोन करबा हमर जुळे जज करि परिबे प्रिजर्व करि परिबे ये प्रकृति रे कोन सिचुएशन को हैंडल कर परिबे कि न परिबे ये मैन नॉट डिपेंडेंट अपॉन पेपर मैनिफेस्टेशंस वेल्डन प्रकृति रे पेपर मैनिफेस्टेशन इन द सेंस एग्जीबिशन प्रदर्शन करिबा खाली पेपर रे गोटे पिला भलो करतला बोली से टैलेंट हैला से कथा नहीं सेति पय मु कोच तमे रिटिन में भलो करिबो बट ट्राई टू एक्सेल इन इंग्लिश आई हैव ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिगार्ड फॉर हिम रिगार्ड इन द सेंस इन्फरेंस मींस रेस्पेक्ट मोर सेति पय वेल्डन का प्रति बहुत रेस्पेक्ट दिला कारण से मु पेपर को बेस करके मते सिलेक्शन कलेनी हारो पाए मोर जनरल पर मेंटल एबिलिटी के बेस करके से जानले कि ए प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर in consequence of his decision. I was in a due course placed in the third or the lowest division of the fourth Robertson crop. Try to understand this line. Almost all are actually advised to go through the course. In consequence means as a result. Of his decision, I was in a due course placed in the third or lowest division of the fourth Robertson crop. What is the meaning of the third division of the fourth? डिवीजन माने कोन कहलो सेक्शन तमर सब न थाए ए सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन डी सेक्शन एमडी तनु से फोर्थ क्लास रो ओ सेक्शन रहिले थर्ड सेक्शन रे पर्टिकुलरली रहिले थर्ड सेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड 4 के विंस्टन चर्चिल the names of the new boys were printed in school list in alphabetical order and as my correct name Spencer Churchill began with the S I get no more advantages from the alphabet than from the wider sphere of letters. बेले बेले एमिति कोन हुए जो माने क्लास रे फर्स्ट सेकंड थर्ड होती से मान को नाटा आगे रखा जाए किंतु जेतबेले अल्फाबेटिकली होइबो ई सी केम चलला जार ना जेते अल्फाबेटिकली लेट रे रहउदिबो सी जेते पछा लाइन जाई कि बसिबो लइबनी किंतु जे जळे जनरल लोक आइबो ए पाठ पढा सिलुजी पछरे रहउछि लोक आजिकली बेसी तो ये समालोचना करिबो लोक को तो अभाव नाही संसार रे सबुडी भरपूर ए रही जदी सो ट्राई टू अंडरस्टैंड आई गेट नो मोर एडवांटेजेस फ्रॉम द अल्फाबेट देन फ्रॉम द वाइडर स्फीयर ऑफ लेटर्स लेटर रे जदी मु देखि तांती
ताले टैलेंटेड बेसिस रे करा जाई थांदा ताले मु भलो पढे कि न पढे ऑटोमेटिकली मो नाटा आगे काले होई जाई पाता ये तो अल्फाबेटिकली रहिला तो एस स्पेंसर चर्चिल एस सीरियल आसेला बडे कोन हैला I was in fact only two from the bottom of the whole school, and these two, I regret to say, disappeared almost immediately through illness or some other cause. मो ना एमिति जाई करी रहिला मो परे परे जमा आ दि जण रहउतंदी लास्ट रे माने बाबू दाओ तळु एमिति छिडा आइ दिबा शेषु कि जे छिडा आइ तुम ठीक लाज लागे लाज लागिबो यदि पछरे दि जण थिबे हां को पछरे ताउ दि जण अछंदी आ कोन आशीष अछि आ विश्व अछि आ लाज लागिबो तर जे विश्व रहला कोन भौमी भागर आशीष रहउछि 16 पूजा से दि जण आथिले मु कोन एबि पछरे छिडा आइ दिबि तेणु चर्चिल कहते बेले बेले एमती हुए लास्ट में जो दी जन को पछरे छिड़ा होती से इंग्लिश को आसंते तेणु मते बेसी खराब लगे कोन कि समस्त माने बे पाठ पढो तो हर कस्टम ऑफ कॉलिंग द रोल कॉल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ रिटर्न ऑफले डिफरेंट स्कूल रो डिफरेंट कस्टम रही छि रिलेटेड टू रोल कॉल हमर विशेष करी आमे कोन करू ना आके क्या ऐसा इस मैडम में कहबो सेठी लंदन रो कल्चर सेमिति नुई गोटे गोटे जगह रो आ गोटे गोटे जगह को कैरी करी कोन देखो the horror custom of calling the roll call is different from that of Eton. At Eton, the boys stand in a cluster and lift their hats when their names are called. Really? Topi hats. Eton रो गोटे प्रिंसिपल दिला particularly at Eton the boys stand in a cluster line नै कि सब छिडा आबे वो माने जेतबे कहै जेबो आशीष टेस्ट कर टोपी टोपी के देखि से ताको कष्ट और सब को माने कर कंपलसरी टोपी आमे केवल क्रिकेट खेलला टोपी न खरा हो जेबे टोपी आम मुंडरे को टोपी केन केते बडे के यूज कर so students at Eton the boys stand in a cluster and lift their hats when their names are called they file past a master in the school and answer one by one देखो पहले किंतु भारत रे कोन रहइबो फाइल पास लाइन करके चलती रहे 1 2 3 4 जब हम रोल कॉल करू छे सेमे ना मध्ये कॉलिंग उठिबो जो मन करला जेमी थिबो केड कर स्पॉन्सर विशेष कर स्पेंसर ना करू छे लास्ट डिजिट दिबारो सेटी मतलब टोटली गोटे प्रकार कोन होई ना लेडिस एनवायरनमेंट क्रिएट लोक माने टिके कमेंट करिया को चेष्टा करनती लोक माने टिके शो ऑफ करनती लोक के लॉजिस्टिक अनलॉजिस्टिक इलॉजिकल वे रे कहबा को चेष्टा करनती कैरेक्टर पर्सनालिटी रो को लास्ट पे ले जाउ छी पाठ बोली लोक ना इस पर्सन नहीं सो स्टूडेंट्स my position was therefore revealed in somewhat invidious humility. Invidious humility means miserable condition. बेले बेले रोल कॉल को अनुଯାयी जण पर इंपोर्टेंस बढ़ी जाए कि तो रोल नंबर समय कहते हम वन पिक द बेस्ट स्टूडेंट्स बेस्ट हैंडसम बॉय ऑफ लर्निंग सौम्य रोल नंबर 1 जरा जे पचारिबा सौम्य तो रोल नंबर केते 501 तो केते 501 स्टूडेंट अछि मोर 501 और तो बुझी करते नहीं ठीक है इनविटेशन लागिबो नै तमर रोल नंबर तुमको प्रथम करी जे डाके देला माने कि किछि गोटे साइकोलॉजिकली कि तुमको इंप्रेस करे सो इट वाज इन द ईयर 1887 लॉर्ड रैंडॉल्फ चर्चिल had only just resigned his position from leader of the House of Commons and was chancellor of the exchequer दिले विंस्टन चर्चिल कर बापा दिले किए समय विंस्टन चर्चिल कर बापा किए दिले लॉर्ड रैंडॉल्फ चर्चिल से कौन थे मेंबर ऑफ द लोअर हाउस लीडर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स माने कौन पिले हम इंडिया रो पार्लियामेंट होची बाइकैमरल माने दीटा शब्द नाम अछि संग्राम गोटे होची लोअर हाउस आ गोटे अपर हाउस गोटे हला लोकसभा आ गोटे हला राज्यसभा तो इंग्लैंड रे मध्ये दीटा हाउस अछि गोटे होची हाउस ऑफ कॉमन्स आ गोटे हला हाउस ऑफ लॉर्ड्स अतला अपर हाउस के सौम्य हाउस ऑफ लॉर्ड्स लोअर हाउस के हाउस ऑफ कॉमन्स हमर लोकसभा जानती ताकर हाउस ऑफ कॉमन्स हमर लोकसभा रे मेंबर माने जे जाइछन एमपी गिरी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेमिति ताकर हाउस ऑफ कॉमन्स रे मेंबर मान सिलेक्शन करा जाय जे विंस्टन चर्चिल कर बापा
Churchill ଥିଲେ House of Commons member ଆଉ କୋଟି कोन ଥିଲେ टर्म यूज करा जायछि chancellor of exchequer chancellor of exchequer माने किए फाइनेंस मिनिस्टर ଆମ ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ फाइनेंस मिनिस्टर ଏ ଅଛନ୍ତି निर्मला सीतारमण तो कोन जानि କଥା कि ना तुम इंडिया बाहर को पळिलो ना इंडिया बाहर से गुड ସେଇ ଯୋଗ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରୁ କିଛି ପସନ୍ଦ କୋଉଠୁ ଇରା ଇଣ୍ଡିଆ ପୁରସ୍କାର ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ନା ତମ ତ ବାଡେ ଆସିଲେ ସେ ବୋଲି ତମ ନା କହିବି ଆଉ ଦେଖ chancellor of the executive and he still lawyered in the forefront of politics he still lawyered in the forefront of politics actually students forefront of politics very powerful person in a political field रे बहुत powerful person खांदे आउ जेते डिपार्टमेंट अछि मनी बहुत पावरफुल नहीं मनी रा सब्स्टिट्यूट नहीं तो फाइनेंस मिनिस्टर को अच्छा सब्स्टिट्यूट नहीं बहुत बढ़िया पावरफुल जणु पिले so try to understand and he still lawyered in the forefront of politics तांकर बहुत रेपुटेशन थिला कार लॉर्ड रैंडॉल्फ चर्चिल करो so students in consequence large number of visitors both sexes used to wait on the school steps in order to see me march by and I frequently heard the irrelevant comments why he is the last of all तमे जानथिबो आजिकली पुओ जे सिना पाठ पढुते स्कूल रे कि बापा मां माने आउदी आगु जाई पाठ पढला बडिया चिड़ाई देबे गेट बस एबी देउन इंग्लिश मीडियम स्कूल रे आगे बापा मां नै कि छाड़िया को दिबे बापा मां दी जण नै कि दिबे धर ज मामा नै कि जे वाले बापा नै कि दिबे जण करी सब गार्डियन माने जते बेला आस्ते पिला मन पई गोटे गोटे कि तमे जेमति ए पांच रोले लाड को बापा मां माने सादा राशि अभ्यर्थना देखि तो हम ये होती करू ओ कुनी जो खाइनी 3 घंटा लानी क्लास करती लमिक इंडिया तांग संग टिके अमूल पीजे माइंड का टेंशन नै स्पीड होई दिबो तमे तो बोलो माने आलकम गई रहे से जाके रेमिक सेकेंड पर खाइ कमला पर लागि तेणु जेमि तुम मान घर लोक रिसीव करना से विंस्टन चर्चिल की गेट पाखे छिड़ा कोठी रोल पर गोटे गोटे एंट्री करके एंट्री करते क्लास आवर रे एग्जिस्ट करते आफ्टर द क्लास इज ओवर से तुम देखुले कोन विंस्टन चर्चिल लॉर्ड ऑफ चर्चिल पर पुओ ये कोन गोटे लास्ट टाइम रहउछि मो ये कोन एमिति पाठ पढछि लास्ट रा लोक मन तो बुझिबे नि किछि दैट इज द एक्चुअली इररिलेवेंट कॉन्सेप्ट नॉट फेवरेबल Okay, students, glossary is there in page number 59. Open your book at page 59, students, or it is available to you. Inhospitable, unfriendly. Just go through the books. Look down the book, students, for your hospitality. Inhospitable, unfriendly. Invariably, always. Incidentally, by the way. An English public school for boys in the town at Ahmedabad. In northwest London. Don't and as much as drops of the tears of red specks on paper. जो हम पहले पेपर रे कौन करना दागा को देख spectacle means sight usher means attendance discernment means judgment the third division of the fourth means third section of the standard code invidious stimulated enviable humbleness Lord Randolph Churchill the father of Winston Churchill irrelevant comment is respectful. Okay, students are here lacking by 1 minute. Still, I want to find out this, and it is your responsibility, students. Just go through the exercises given to the point or a serial 13. There are a question दिया जाएगी. Next class में देखिएगा तमाम मॉडल को मानना कोटे धाड़ियों दिधाड़ियों आंसर करके आनिबो. Thereby a provided कौन रहेगा? ना जो glossary रे word meaning अच्छी ये पढ़ी के आसतो छ हमरा मॉनिटर होची कि मते नेक्स्ट क्लास रे के रिमाइंड कर दो सो हमरा मन पकई दबो मो बच्चे सुना पला बडा ग्लोसरी रो मीनिंग कहबो आ एटा को ट्राई और बेस्ट 11 क्वेश्चन यदि किसी प्रॉब्लम है तो विल